A very good morning to everyone at Panashia today. So we have with us Yoga by Connect for Meher Munjal with us, and we would like to invite her for this session today for the yoga sessions. If we can please bring her live on screen. Hello, hi. Uh, I think there is some technical glitches. Uh, we can't uh, we can't see you on screen right now. Deepak is yeah. Yes. Welcome, Mayor, to the show. And I welcome everyone watching us at Panashia today. A very good morning, and I'll leave the screen to Meher right now for conducting her yoga sessions. And just to inform that Meher will be conducting her sessions the entire month of February. So we welcome her. And Meher, you can please go ahead with your sessions now. Yes, please. Thank you so much, Pooja, for this lovely introduction. And I'm very, very grateful to be here, part of Panacea. And I thank Panacea and I thank Beatrice and eHealth for giving me this opportunity to share this wonderful gift of yoga with all of you today. So, as we all know, yoga, what is it? Yoga is the union of your body, mind, and soul. योगा आपके body, mind और soul को एक करता है, correct? And it's very important to purify the body, then purify the mind, then purify the soul, and then at the end, meet your perspective, meet your union, and that is yoga. And जैसे हमें पता है, the last series I did was for the COVID, the mental state after, you release COVID. So now we are moving on since, by the God's grace, the cases in India have gone down and things are getting better for our country. So now we are taking forward, how to boost your immunity because the pollution is still the same. The quality of the air in Delhi is still the same, and in India, in fact. So how do we cope up with that? उससे बहुत important होता है जैसे आपका प्राणायामा. After you cleanse your breath with the pranayama, then you do your asana. After you cleanse your body with the asana, and then you do the dhyana, that is meditation. The whole goal of yoga is to reach your meditation self. Now, I will start with a chant. So please do follow me in the chant. Chanting is very good just to get your aura clear. After you do the chant, we will do the pranayama, in which you will just be using a lot of your lung capacity. Pranayama matlab prana, matlab vital energy, or yama, through the breath. So vital energy through the breath. How do we get that? Just going to put this full screen. I don't know how to put this full screen. Okay. Okay. Just चलिए start करते हैं. अगर आपकी कोई back problem है, so you can put a cushion right under your hips so that your spine is a little bit elevated, थोड़ी उठ जाती है. If you can sit in half Padmasana, if you can sit in normal Siddhasana, you can sit in normal cross-legged position, or you sit in the full Padmasana. Hands in Chin Mudra, roll your shoulders back, close your eyes. We will take yogic breath, matlab inhale through the nose, expand your abdomen, expand your lungs deeply, and exhale completely through the nose. Again, inhale nose, expand abdomen, expand lungs. Exhale nose. One more, inhale. Exhale. Just staying here a few seconds. Just try to relax the body completely, relax the mind. Just take a few deep yogic breaths. Expand your body and release.
Trying to do this practice with your entire mind and mindfulness, with your 100% awareness and focus. Chant करेंगे साथ में ओ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ति अमृता. Palms together, rub your palms to your eyes. Slowly open your eyes, take it to your palms and face and rest of the body. We will start with Kapalbhati Kriya. Kapalbhati is a very good pranayama to cleanse your stomach and your lungs and oxygenate fresh oxygen into your blood. Okay. So Kapalbhati कैसे करेंगे? We'll inhale through the nose and then exhale slowly through the nose only. So we are not using your mouth at all, just inhaling and exhaling through nose. While you're exhaling through nose, you will take your stomach in little bit like this. तो आप अपना राइट हैंड पे स्टमक पे रख सकते हैं जस्ट टू फील द पंपिंग ऑफ योर स्टमक. बस स्टमक को अंदर करना है, छोड़ना है, अंदर करना है, छोड़ना है, अंदर करना है, छोड़ना, और ये सांस के साथ मिला के करना है हमको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Inhale deeply. Exhale first normal. Inhale. Begin. Little faster. Slower. Faster.
Exhale. Inhale deeply, yogic breath, expand abdomen, chest, lungs. Exhale, release. Inhale, expand the body. Exhale, take your chin to your chest and hold your breath. Control your breath. सांस रोक के रखेंगे with control. Stay here. Relax. Slowly exhale. Inhale deeply. Exhale completely. And slowly अगर आप चाहते हैं तो अपने hands अपने eyes में रख सकते हैं. You can just open your eyes for a second. Just take a deep breath here. Relax. If you want to move your legs. कभी कभी जब ऐसे posture में बैठते हैं तो थोड़ी legs cramp हो जाती हैं. So it's always good to keep moving and shaking your legs and just moving your hips a little bit, just little bit movement in the body. Because pranayama में movement of the body allowed नहीं है. We should be still. Our body should be still. We should be on the mat, relaxed, not disturbed by our body. So if you have to release any kind of blood circulation, this is the time. After one round of pranayama, then you release your legs, then you come back when you're ready. Okay. अब यहाँ से हम सेकंड वाला प्राणायामा करेंगे. दैट इज अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम इज नोन एज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. मतलब हम एक नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे अपने दोनों नॉस्ट्रल, मतलब ये सांस रोकेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे दूसरी नॉस्ट्रल से, और फिर वहीं से इनहेल करेंगे, ब्लॉक करेंगे और फिर दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे. ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, इजी प्रैक्टिस है और बहुत बहुत एफिशिएंट और बेनिफिशियल भी है. हाउ डज अनुलोम विलोम इफेक्ट आवर बॉडी? इट क्लियर्स द नेजल पैसेजेस. It balances the frontal lobes of the brain. Right and left हमारी lobes होती है ब्रेन की, साइड होती है ब्रेन की, उसको अनुलोम विलोम बैलेंस करता है. ओके, तो जैसे कभी कभी राइट हमारी साइड होती है क्रिएटिव साइड, लेफ्ट साइड होती है इंटेलिजेंट या इमोशनल क्वोशंट साइड. डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट माइंड में इम्पैक्ट होते हैं, तो उसको एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसको अनुलोम विलोम बैलेंस करता है. ठीक है, सबकी बॉडी का डिफरेंट होता है, कई कई का सेम भी होता है. So let's try to balance the mind. Into position, hands in chin mudra, your thumb and index finger touching like this, chin mudra. This is the mudra you sit for pranayama and meditation, dhyana. Close your eyes, take a long deep breath, inhale, exhale. And slowly take your right hand into Vishnu mudra. Matlab you fold your first two fingers like this. You will just be using your thumb and your last two fingers for this practice. Okay. Other hand will be normal in Chin Mudra. This Vishnu Mudra is very important for the stability of the breath. So let's begin. Right thumb to right nostril. Close your eyes, back straight. Inhale through left. Block both the nostril. Hold your breath. Stay here. Exhale slowly through the right nostril. Inhale right. Block, hold your breath. Exhale left. Inhale left. Block, hold your breath. Exhale right.
Inhale. Block, hold your breath. Exhale, left. Inhale. Block, hold your breath. Exhale, right. Inhale, right. Block, hold your breath. Exhale, left. Inhale, left. Block, hold breath. Exhale, right. Inhale, right. Block, hold breath. Exhale, left. Inhale. Block, hold breath. Exhale, right. Last one. Inhale, right. Block, hold breath. Exhale, left. And slowly release your right hand back into Chin Mudra on your right knee. Take a deep breath. Inhale, exhale. One more deep yogic breath. Remember expansion and contraction. Slowly, you can rub your palms together. Put your palm on your eyes. Slowly open your eyes into your palms and relax. And तो ये था हमारा अनुलोम विलोम. Instant effect is that your mind instantly feels calmer. Okay. And you get more mindful and more focused into the practice. This was Anilom Vilom. We'll do the last pranayama before we move into the asanas, which is just very easy. अपनी सांस इनहेल करनी है फिर से नोज से और एक्सहेल करनी है विगरसली माउथ से, मतलब जोर से थ्रू योर माउथ. ओके, so you can put your hands on your thighs. Okay, if you want to move your legs for a second, just go ahead, come back when you're ready. Take a long breath. Take your hands on your thighs and just lean forward like this. When you're going to exhale, you're going to take your tongue out. इससे जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं माउथ के, यहाँ जो हमारे ऊपर ऊपर लंग्स वगैरह में होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं. It's very very important to get this out before we start with the asanas. So let's just lean forward. Inhale nose, 10 rounds we'll do. Inhale nose, exhale mouth. ऐसे आपको थ्रोट से आवाज निकालनी है. ओके, नॉइज थ्रू योर थ्रोट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more time. Relax. Inhale, exhale, normal breath, yogic breath. Rub your palms together.
Just take it to your eyes, open your eyes, take it to your face and rest of the body. So already we feel our lungs and our chest lighter with this vigorous exhalation. Okay. Now let's proceed with moving our legs on your mat. आई होप आप सब मेरे साथ ही कर रहे हैं और थोड़ा रुक रुक के कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा स्किप हो रहा है, इट्स ओके। ये मैं थोड़े थोड़े लॉन्ग काउंट्स कर रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट काउंट्स करने हैं, आपका बिगिनिंग सेशन है, तो आप जैसे आपका बॉडी चाहे आप वैसे करिए। द टीचर विल ऑलवेज डू little bit more, obviously that's my job, right? So you do how much ever you are comfortable, how much ever your body allows. Don't overexert yourself, do as much as you're comfortable, and always remember to do the yoga practice on the mat. कभी कभी हम ऐसे बैठते हैं, स्क्रीन हमारी आगे होती है ऑनलाइन योगा क्लास में, हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, दैट्स नॉट राइट। जब हम जो मंत्रा चांटिंग ओम ओम करते हैं, वो हम अपने योगा मैट पे मंत्रा सिक्योर कर लेते हैं, दैट्स द रीजन फॉर चांटिंग ऑल्सो। हर चीज का योगा में साइंटिफिक और लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजनिंग होती है। तो चांटिंग मतलब हम अपने मैट को सिक्योर कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं, तो हम अपने मैट पे ही रहना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है। Ankle rotation for 5, 4, 3, 2, 1. Another side, 5, 4, 3, 2, 1. And just move your foot front and back. आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे. Shake your hands. And this rotation 5, 4, 3, 2, 1. And other side 5, 4, 3, 2, 1. And hands and feet move together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One more. Relax. अपना मफलर निकाल देती हूँ अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, so you can always take out. Okay. So यहाँ से we will take your legs wide apart, open them. Make sure that you're sitting on your sit bones, means अपनी जो hips के अंदर नीचे sit bones होती है, make sure you're sitting on that. Just remove the extra flesh from your hips. Make sure your legs are as wide as you can. They are straight, and make sure that your toes are facing to your face. We'll slowly take our right hand close to the right ankle as much as you can. If you can put your elbow down, then try. If you can't, it's okay. Twist the body outward. This is very important. ऐसे नहीं रहना है हमको, अपनी waist में twist करनी है, so to feel the stretch. And then left palm up towards the ceiling. Look up to your palm and take yogic breath. हर आसन में जो मैंने पहले आपको योगिक ब्रेथ सिखाई थी, प्लीज प्लीज यूज करिए, तभी आसन का इफेक्ट 100% इनहैंस होता है। ठीक है, सो लेट्स लुक अप, स्टार्टिंग फॉर 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 5 more. 4, 3, 2, 1. And very slowly lift back and relax. Take long breaths here. Remember, taking deep breaths is the main thing to do in yoga. It's the main practice to do in yoga. If you don't take the deep breath, nothing will affect. So please remember your deep breath. Okay. अब अपनी right side को face करेंगे. Just twist your body towards your right side. Again, make sure your legs are straight, toes facing to your face. Interlock your hands and stretch your hands up, up, up. अपनी back भी थोड़ी ऊपर stretch करेंगे. And then exhale slowly, fully down. जितना भी नीचे आ सकते हैं, जा सकते हैं, you can. Head down,
towards your knee and again taking your yogic breath for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 4, 3, 2, 1. And very slowly walk back on your legs. Slowly come back. Forward bending से जब वापस आते हैं, always slowly come back so that we don't get a head rush. धीरे धीरे वापस आएंगे always. Okay, good. Let's do the other side now. So you're just gonna drag your left palm to the left ankle, twist your body, right palm up, look up, take deep breath here. Legs are straight for 10, 9. Feel a lovely opening on your side. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 more. 4, 3, 2, 1. And very slowly lift back up and relax. Yogic breath. Nice. I'm already feeling very nice and open and stretched. Okay, hope you guys are feeling the same. So we're just gonna twist the body to the left. Again, interlock your hands and stretch your back up, and then exhale as much as you can. Head down. Breathe your yogic breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 more. 4, 3, 2, 1. And very slowly walk back on your legs. Slowly come back to sitting position. Inhale, exhale here. अब हम यहीं से एक फुल फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे. सो अगेन मेक श्योर योर टोज आर फेसिंग टू योर फेस. बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप भूले ना. कभी कभी ऐसे बैठते तो ऐसे हो जाते हैं पैर, ऐसे हो जाते हैं पैर, ऐसे हो जाते हैं पैर. So that's why I always remember to keep it straight and active, okay? And tight. Use all your leg muscles when you're doing the exercise, in the asana. Okay. Take your hands up and stretch your hands up. Exhale fully down. Your hands outside of your ankles. Hold your ankles. If you're not able to hold ankle, you can hold the knee, you can hold the thigh, whatever comfortable. And head down, close to the ground. Breathe here, yogic breath. 10, 9, 8. Lovely stretch on your inner thighs. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 5 more. 4, 3, 2, 1. और बहुत धीरे धीरे ऊपर आएंगे. Walk your hands back also. And relax. Inhale, exhale. Very good. So now we will go into the butterfly asana. So your feet together, your back straight, and you're going to slap your knees. Okay? Now breathing will be normal. Yogic breath.
अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आप कुछ पर्टिकुलर आसन के बारे में जानना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज contact after the session is done, comment below or just contact the company directly, and I shall get back to you, because a lot of people have different queries, so we will answer everything. Okay. From here, we'll just do one forward bending, so you can just lift your tailbone, lift your back up, and then exhale slowly. जितना भी नीचे जा सकते हो अपने बैक को लेके जाइए और stay करिए, and just take your yogic breath for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 5 more. 4, 3, 2, 1. And slowly lift your body up back to sitting position. Take deep breath and relax. अब यहाँ से हम सिद्धासन में बैठेंगे, दैट इज वन लेग इन फ्रंट ऑफ द अदर. अगर इस आसन में नहीं बैठ सकते हो तो यू कैन जस्ट सिट इन नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन, सुखासन. ओके, hands on your upper thighs like this, your elbows facing forward. We'll do a full body rotation. Really push your back forward and exhale and fully take big circle, big round. Okay, so give it your best. Inhale, we'll go right side, really stretch down, exhale back. 2, 3, 4, 5, and other side 5, 4, 3, 2, 1. एक और बारी करेंगे, one more. Relax. Wow, full body stretched. Now from here we'll do a spinal twist. तो इसी आसन में बैठेंगे. मैं बस इस साइड चेंज हो गई तो आप मेरे को देख सकते हैं मेरी बैक. तो उसी आसन मतलब सिद्ध आसन में वन लेग इन फ्रंट ऑफ द अदर बैठेंगे. Take your right hand up, stretch up. Take behind on your left hip. Right हाथ अपने left hip पे रखेंगे. Okay? And then left हाथ आपका पीछे जाएगा, just behind your back. And you will twist your back and look over the left shoulder, taking deep yogic breath. Let's stay here for a spinal twist for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5 more, 4, 3, 2, 1. And slowly relax and come back. And let's do the other side, of course. So take your left hand up, stretch up. Take on the right hip. Right hip पे रखेंगे अपना left हाथ. Right hand behind. Twist. Lift your back. Look over the right shoulder. Breathe deeply. 10. Final twist. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5 more, 4, 3, 2, 1. And very slowly come back and relax. Take a deep breath.
Okay. अब यहाँ से let's proceed to the cat cow posture. So we'll go on your fours, मतलब अपनी fours में जाएंगे. You're on your knees, your hands are under your shoulders, so you're on your fours, okay? Your knees can be a little bit apart to give it a good balance. You're going to inhale, lift your back up, head up, inhale. Exhale, round your back, really curve your back and look to your stomach, exhale. Very nice. From here, let's do this again. Inhale up and exhale down. 3 and down. 4 and down. 5 and down. And come back. और यहाँ से थोड़ा बैलेंस करेंगे तो अपना राइट हाथ और लेफ्ट लेग ऊपर लेके जाएंगे. Just take your left leg back and right hand forward. Balance here. 10. Higher. Keep it straight. 9. 8. Look forward. Don't look anything. Just look forward at a static point. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. One more. Relax slowly. कभी कभी इतना होल्ड नहीं कर पाती है बॉडी. इट्स ओके. Do as much as you can. Okay. Let's do the other side. Lift your leg and hand up. Breathe here. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. One more. Come back. Slowly. Relax. Inhale, exhale. अब यही अगर आपको रेस्ट करना है तो आप 1 सेकंड रेस्ट कर सकते हैं वज्रासन में. Okay. Coming back on your fours. You just roll your body, ठीक है? So you're just gonna push to the right and then lift your back a little bit back. So just roll your back. Okay, we do this 3 times on each side. So let's go forward, roll, exhale, back. Forward, roll, exhale, back. Forward, roll, exhale, back. Very nice. Other side, forward, roll, exhale, back. Forward, roll, exhale, back. Forward, roll, exhale, back. And come back. Take deep breath. इससे क्या होता है आपकी टेल बोन जो आपकी मेन पार्ट होती है बॉडी की आपकी स्पाइन सब ओपन स्ट्रेच एंड यू जस्ट फील वंडरफुल. Yoga is the best practice in the world, guys. It's just amazing. If you're doing it correctly, if you're doing it with me, if you're doing it with your breath, if you're doing it to your full capacity, you're going to feel amazing, just like I'm feeling right now. Okay. Now we're going to proceed to the next posture. So you're going to take your hands under your shoulders and your feet together and then slowly lift your knees and push your hips back. Look down to your stomach. इस posture का नाम है पर्वत आसन, mountain pose. यहाँ yogic breath लेंगे. 10, 9, 8, 7. Try to keep your knees straight. 6, 5, 4, 3, 2. 5 more. 4, 3, 2, 1. And slowly just shift your body forward into a plank. Normal plank. Body in straight line. Stay here. Breathe. 10, 9, 8. अपने stomach में feel होएगा. Just hold it in. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5 more. 4, 3, 2, 1. Go back into plank. अब यही मूवमेंट थोड़ा फास्ट करेंगे 10 बारी. तो पर्वतासन टू प्लैंक पोस्चर, ठीक है, और एक्सेल करेंगे माउथ से ऐसे, ठीक है. So let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just 5 more. 4, 3, 2, 1. Stay here for 3, for 2, for 1, and knees down. यहाँ से आप अपना ब्रजासन में बैठ सकते हैं. You can take a deep breath, या आप चाइल्ड पोज में जा सकते हैं. Just stretch your body, head down. बालासन. Relax. Okay. अब इससे हम प्रोसीड करेंगे बैक इनटू पर्वतासन माउंटेन पोज. टेक वन मोर ब्रेथ हियर और अपनी राइट लेग आगे लेके आएंगे बिटवीन योर पाम्स, अपने हाथों के बीच में. गेट योर राइट लेग एंड जस्ट स्टे हियर लो लंज में, और एक्सेल करेंगे नॉर्मली योगिक ब्रेथ. 5, 4, 3, 2, 1. And slowly, one more, you will put your knee down. अपना जो लेफ्ट नी है वो आप, या राइट नी है, जो भी नी है वो आप नीचे रखेंगे. एंड यहाँ से यू विल स्ट्रेच योर राइट लेग फॉरवर्ड. ठीक है, शायद मेरा सर कट रहा है. यस, ओके. तो थोड़ा यहाँ से बेंड करेंगे एंड अपने हाथ नमस्कार पे ले जाएंगे. नमस्कार, यस, नमस्कार. Stretch and stretch down from your right thigh. Feel lovely stretch in your leg, on your upper body. Head up and breathe here. Anjaneya Asana for 10. Breathing, yogic breath. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5 more. 4, 3, 2, 1. And very slowly take both your hands down. यहीं से अपना जो राइट नी है उसको हम थोड़ा पीछे कर लेंगे. अगर आपके लेफ्ट नी में प्रेशर आ रहा है तो आप अपना मैट फोल्ड करके अपने नी के नीचे रख सकते हैं. ओके, जस्ट ट्राई टू स्ट्रेटन दिस राइट लेग कंप्लीटली and then hands next to your right knee, just head down, really close to your knee. Half Hanuman Asana कहते हैं इसको. थोड़ा अपने एंकल को आगे आगे स्लोली स्लोली से, झटके से नहीं करेंगे, बहुत स्लोली से थोड़ा आगे पुश करेंगे and then head down. Lovely stretch on your right leg entire. Keep it straight. For 10. Yogic breath. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And धीरे धीरे in front and relax. अब सेम मूवमेंट 10 बारी रिपीट करेंगे, बट जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना, इतना फास्ट नहीं, जिससे आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से करिए. तो अंजनेय आसन टू हाफ हनुमान आसन. So again you can exhale through your mouth. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And one more. Relax.
Very good, guys. Doing well. Slowly from here, let's lift your back leg and go back into mountain pose. Parvatasana. Deep breath for 3, for 2, for 1. Left leg forward between your palms. Again, make sure your right leg is up only. Low lunge में जाएंगे. Breathe normal here for 5. Just warming up the leg. 4, 3, 2, 1. And slowly put your knee down. Relax. Adjust your knee if you need to. And यहाँ से अंजनी आसन में जाएंगे फिर से. अपने हाथ ऊपर नमस्कार पे and stretch down. Relax. Look up. 10, 9. Normal breath. Yogic breath. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 more. 4, 3, 2, 1. Slowly hands down and stretch your left leg back into Hanumanasana. Slowly, slowly straighten your left leg. Move your ankle forward. Hands close to your left knee. Head down, close to your left knee. Breathe here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 5 more. 4, 3, 2, 1. And very slowly stretch your legs forward. And let's do this from Anjaneyasana to Hanumanasana, exhaling mouth. Yes? So let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 5 more. 4, 3, 2, 1. And relax into Anjaneyasana. Pick up your back leg. Slowly go back into mountain. Parvatasana for 3. Yogic breath 2. Yogic breath 1. And when you're ready, put your knees down. Relax. You can take a long breath here. Relax करिए. अगर आप completely आगे पीछे full आसन नहीं कर सकते तो it's all right. And if you can do the full asana, if you want to do more than the full asana, like you want to do a little bit more difficult variation, then please wait for the next session, because with sessions we progress the practice. Yes, some are advanced, some are beginners. We start with the beginner and we take it to the advanced. Okay, ठीक है. अब यहाँ से we're going to do chaturanga dand, little bit arm strengthening. तो आप देखिए पहले और फिर हम साथ में करेंगे. ठीक है. ओके. तो मेरे को रिमाइंडर आ गया, हमारे पास सिर्फ 7 to 10 minutes है. So let's quickly do the rest of the asana. So you'll put your hands again under your shoulders, your feet together at the back. और यहाँ से प्लैंक आएंगे. प्लैंक से एक्सेल माउथ करके चेस्ट नीचे मैट पे डालेंगे. अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अपने नीज डाउन करके चेस्ट डाउन करेंगे ऐसे. ठीक है. और भुजंग आसन में आएंगे. ठीक है. तो लेट्स गो. प्लैंक पोस्चर, फिर चेस्ट, एक्सेल माउथ, लिफ्ट अप भुजंगासन. Just let's stay here in Bhujangasana. Your feet together at the back, your elbows straight, your head back, your stomach is above, not touching the mat. Just breathe yogic breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5 more, 4, 3, 2, 1.
Very nice. Now let's go slowly into plank. Chaturanga done. One. And up. Yes. Two. And up. Three. And up. Four. And up. Five. And up. Six. And up. Seven. And up. Eight. And up. Nine. And up. 10. And up. Last one. And up. Relax. Excellent for an arm warm up. And then feet together. Let's just twist for a nice stretch on the back. So twist back to your right ankle. Breathe here for 3. For 2. For 1. Center. Other side for 3. For 2. For 1. Center. Slowly lift your hips back. वापस बालासन चाइल्ड पोज में जाएंगे. Stretch. Relax. Take deep breath here. And slowly relax. Wow. मेरे को तो प्रॉपर हीट आ रही है बॉडी में. अगर आप ये आसन जो भी अभी करे हैं हमने, एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ करते हैं, बॉडी में हीट करते हैं. दैट्स गुड. लेट इट ऑल टॉक्सिन्स कम आउट. यस. ओके. अब यहाँ से लास्ट आसन करेंगे. देन वी गो इनटू मेडिटेशन प्रैक्टिस. So you will sit with your legs in front of you. If you're not able to do this without support, then you can take wall support. Okay, you can put your back against the wall and put your legs up. We're doing Naukasana. So remember, 1, 2, 3. Take your legs in front of your face. Your toes are straight, your legs are straight, your hands are next to your knees. You will exhale here through your mouth. Stay here. Okay. 10. 9. Really feel in your stomach movement. Yes. 8. Core strength. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 5 more. 5. Hold करेंगे. 4. 3. 2. 1. Last one. 1. Relax. Hug your knees. This asana is the best to reduce belly fat. Okay, just to have a more straighter stomach. Get this blood circulation going in the stomach. Yahi, let's just stay 5 counts here again. So you'll just bend your knees and then extend your knees. Okay, you can also do this with a wall support. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. 5 more. 5, 4, 3, 2, 1. Last one. Stay here. 5, 4, 3, 2, 1. One more. Come back. Hug your knees. Deep breath. Yogic breath. Relax. Okay, good. अब नॉर्मल आप सिद्धासन या जैसे भी आपकी बेस्ट पोस्चर, कंफर्टेबल पोस्चर होती है, आप ऐसे बैठ सकते हैं. बैक स्ट्रेट रखेंगे. थोड़ी सी नेक रोटेशन. So let's just do it with your back straight. Inhale, head up, down, up, down, up, down, up, down, to the right, center, left, center, right, center, left, center, and far of right, look behind, really twist, come back, far of left, come back. Neck rotation, slowly, big circles. Inhale to the right, exhale down left. 2, 3, 4. अदर साइड करेंगे. Inhale 4,
3, 2, 1. Yes, come back slowly. You can head to the right side with your right hand slowly pull down, relax. Left side, pull down slowly with the left hand, relax. Shoulder rotation, very important. Hands on the shoulders. Inhale back, exhale together. Big circles, 2, 3, 4. Another side, 4, 3, 2, 1. Relax. Just keep your hands next to your waist and just move side to side, exhaling mouth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 4, 3, 2, 1. One more. Relax. Inhale, exhale, relax. Sit in a comfortable position. Roll your shoulders back, hands in chin mudra. Close your eyes. Focus on your breath. Just a few minutes of silence, meditation. Deep breath, inhale, exhale. Relax your body completely. Relax your mind. Just focus on your deep yogic breath. Focus on your breath. Letting go of anything that no longer serves you through your breath. Use your breath to let go of any energy that no longer is willing to stay in your body, in your mind. Just let go. And slowly put your awareness on the point between your eyebrows. That is your spiritual eye. That is your third eye. That's your Agni chakra. Focus on the point between your eyebrows. If you wish to feel your point, you can, but please keep your eyes closed. Connect with your inner self through your breath. This is the time for your own self. Completely surrender. Feeling that sense of calmness, feeling the sense of relaxation, feeling the sense of complete positivity at this point. Welcoming all the good positive energy into our body. Inhale, exhale. When you're ready, palms together in front of your chest. Let's chant, keeping all this energy into our body. Loudly and vibrantly we'll chant. Or you can just listen to the chant if you like. Inhale, exhale again. Om Purnamida Purnamidam Purnat
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 and palms together. Deep breath to your eyes. Slowly open your eyes and your palms. Take your palms to your face, rest of body, and come into gratitude posture. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Have a great day and thank you so much for joining me, Meher, Yoga Connect by Meher for this session. Thank you, Pooja. Thank you so much, Meher, for this wonderful session and this yoga chants and all everything. It has been really wonderful, and we look forward for more sessions with you in this entire month now. So I would like to take a leave from you, and we go over to the next session with us. We have Vaibhav Garg. Welcome, Vaibhav. Very good morning to you. We have Vaibhav Garg with us, clinical nutritionist, founder of Pure Size. So, Vaibhav, we would like you to take the session today at Panacea of about our daily nutrients, like at the ongoing pandemic, and now the vaccines are out, the post-COVID effects which people are getting into. So, we would like to have your insights regarding this topic of daily nutrients, which is very important to boost our immunity at a peak, and to fight against any of the diseases other than COVID as well. So, we would like to hear from you. Good morning, Pooja. Thank you so much. So, yep, I'll take over. Good morning to the audience. It's great if you could make it for an early Sunday morning session. Clearly, if you are here attending today, you are keen to improve your health and fitness. So today, I actually decided to take a different approach towards addressing our daily nutrition requirements. Today's session would focus on the following groups of people. One, the general population, people who are just looking for general tips and advice on what they can do on a daily basis. Second, what can the fitness enthusiasts do? Most of us enjoy doing yoga. You may have attended the session with Meher earlier. We like to go to the gym. We might be playing sports. Some of us might be weekend warriors, wherein we just play sports over the weekends, right? Then we'll take into consideration children as well. As parents, as young parents, it's very important to take care of your children's daily requirements, that too from a young age. So keeping all these people in mind, as I progress in the session, I'll give you some examples of the people I've worked with. So people in the general population facing issues related to high cholesterol, sugar levels, fatty liver, for example. I'll speak about regular gym goers that I work with and what changes and transitions they've seen by adopting, good eating habits. And I also speak about a recent case that I've been working with. He's a 12-year-old boy who's pursuing badminton professionally. So, I'll start off with that. He started working with me just about 20 days ago. He came with his mother, and they just shifted from Nigeria because the mom. They were staying in Nigeria for a very long time. His father's doing business in Nigeria. So mom shifted to Gurgaon with her son because they wanted to help him pursue his badminton career. He wasn't getting past the first and second rounds in his tournaments previously. Just after 2 weeks, 15 days of following my nutrition regime, the boy reached the semifinals for the first time in his tournament, because all the issues that he was facing that were not letting him perform at his optimum best, we negated those. So we saw a lot of difference. Now, so what are these things? So what I'm going to do basically is address the daily nutritional requirements from a perspective, from a perspective that we call stress.
Now, stress usually we associate with only the mind, which we call either emotional stress or psychological stress. Yes, it has a negative bearing on the body, but today I'm going to be addressing the stresses that are caused in the body due to certain nutritional habits. Okay. Now, what are these nutritional habits that can cause these various kinds of stresses? For example, high levels of sugar in the body, high levels of cholesterol, joint pains. This is a form of stress that manifests in the body due to some eating habit, some lifestyle problem. Okay. It can be your sleep. If you did not know, you must sleep at least 7 to 8 hours daily so that the body can recover. Okay. So that the body can detoxify. Sleep is practically therapy. It is at night that your body will recover for the next day. If you do not get sufficient sleep, your body will be in a state of stress. Your body's stress hormone, your cortisol levels will dominate through the day, and all the good hormones as a result will suffer. Anyway, coming back to the food part. Okay? So for the daily office goer, let's start off with the general population. People are just looking for general advice. Stop relying on ready to eat stuff, shortcuts. The industry is selling us tons of foods. You go to the supermarket today and you'll find all kinds of foods that say that they're healthy. They'll have wonderful labels on it that it's cholesterol free, it's fat free, and this and that. It doesn't mean that it's healthy. We even see advertisements for various aerated drinks. They throw various morning breakfast cereals. Just because they throw in an athlete there to endorse it, or a celebrity, does not mean that they're actually consuming those things. Okay, it's just, this is what we call marketing. It's just a way for them to sell these products to us. So while you might think that maybe eating your cornflakes with milk might be healthy for you, well, reality check for all of you, it's probably the worst breakfast option available out there. One, first of all, corn, which it's made from, is a genetically modified crop wherein it has goitrogenic properties, which means that it actually slows down the function of the thyroid gland. Now, your thyroid gland is basically responsible for your metabolic rate. We've all heard of the term metabolism. That's basically how fast your body works, or rather, how fast calories would be burnt in your body. Yes, when you consume foods like corn and corn flakes, it slows down the functioning of the thyroid gland. You obviously don't want that happening, right? And then going for things like whole wheat breads, multigrain breads, just take a break, look at the ingredients. Everything would be made from processed ingredients. Maida, for example, there's sugar in it. There are tons of adulterants and preservatives that are used in it. Tell me, what is the problem eating a fresh homemade chapati or a paratha, okay, as opposed to consuming whole wheat or the so-called whole grain breads? Why do you have to consume something that comes in a packet and has a huge shelf life, as opposed to something that can be made fresh at home? If you can be disciplined about your work schedules, right? Get to work on time, work for long hours. We're all working more than 8 to 9 hours a day. In India especially, we work endlessly, 12 hours, 15 hours sometimes. Why can't you spend a little more time towards figuring out what you need to eat on a daily basis? So get away from what the industry promotes and what the industry terms as healthy. It's very simple. The food that we need to eat is the one that is available in your kitchen, which is fresh. Your fruits, your vegetables, your grains, okay, your millets, your nuts, your cereals. When I say cereals, I'm referring to things like rice, right? Your pulses, your dals, your legumes, your rajma chole, for example. This is obviously a very generic view of what food we must consume. I'll come to the nitty gritties. Let me speak about the second group of people, which is the fitness enthusiast. Now, as the fitness industry has been functioning, there is an overemphasis on the consumption of protein. It's very simple. You go to the gym, and
probably the first thing related to nutrition that you will discuss either with a trainer or with other people who are visiting the gym or any fitness facility is that you must consume protein. Whether you're there to lose weight, to gain weight, trying to manage your diabetes, your cholesterol, whatever it is, there's one foundation for everything, that you have to eat your protein. आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, वरना you will not get results. And where does this protein come from? Either from your non-vegetarian sources or from your protein powders. And these protein powders are milk-based protein powders, which we call whey protein. Now, don't get me wrong. I'm not sharing my personal opinion here. I'm sharing purely what science has to say. This is all proven stuff. We got case studies, we got journals, research papers out there that prove, okay, that when you consume more of these animal-based proteins, it destroys the gut bacteria. It causes inflammation in the gut. Remember, I said the focus of today's session is the stress that is induced in the body. Now, if you're experiencing any of these side effects, you might not feel the symptom all the time, but there is something happening that is causing stress. In a stressful environment, the body cannot function. So even if you're getting your animal-based protein, your body is not utilizing it. Your body utilizes only about 30% of the animal-based protein you're taking, whereas if it is from vegetarian sources, your body will utilize almost up to 90% of it. So while you might have to give more volume in terms of vegetarian protein, you also get the goodness of it, which is all the micronutrients, your vitamins and minerals, the antioxidants, the fiber. You don't get any of those things if you're eating your animal-based protein. So I'll give you an example of one of the cases that I've been working with. He's been working with me for many years now, and he's literally become an advocate of what I do. He's become like my marketing arm. And I mean, I've got nothing to gain from that. It's just that he's benefited so much that even when his sister flew down from New Zealand, he forced her to come and meet me so that she could, live a healthier lifestyle. So he was very lanky. Obviously, I will be keeping everything anonymous. He was very lanky, and he used to eat meat 3 times a day. And he was a regular gymmer. Obviously, he used to eat meat 3 times a day, thinking that if he eats meat, he will be able to put on some muscle, pack on some muscle, and get some definition. His body might look good. Well, I had to break it to him that this is not how you're going to get results. Today, after following that regime for so many years, he's completely on a plant-based to a vegetarian diet. Okay. If you see his photos, he's totally transformed. Okay. He's got 6 packs now. He's definitely bigger in size. The trainers he sees in the gym, and he does a lot of Indian-based workouts as well, the Akhada-based workouts. They are in awe of him as to how he's managed to do that in a 6 to 8 month period without eating any meat, without eating any non-vegetarian food, without consuming the extra cheese and paneer. Well, we created an environment for him in the body wherein he was consuming high quality whole food. Now, this high quality whole food basically is lots of grains, legumes, pulses, lots of nuts, okay? And obviously you need your carbohydrates. So he's eating his rice, he's eating his wheat as well. He takes lots of fresh juices, he's eating his fruit as well. That's just the ideal environment in which the body can function. You need to give the body an ideal environment to function, to be able to absorb those nutrients, to be able to respond ideally. So we created a situation where there was no stress in his body. His gut health was at its peak. Everything he was eating, the body recognized. So when the body recognizes the stuff that you're eating, see, our bodies are meant to consume herbivorous food, which is plant-based food. The lining of our gut, the acids in our gut that are produced are not designed to break down highly acidic animal-based protein. Okay, and the same goes for milk products like milk, curd, and paneer. As a society, traditionally we've been inclined towards consuming a lot of milk products, but you know what? There's a big gap there. Again, that's something that the industry actually pushed on us. We are actually the only species of mammal on the planet that consumes the milk of another mammal and another animal. Milk is a species-specific food. The cow's milk is for the baby calf. Okay, the goat's milk is for the baby calf.
Human milk is for humans. We don't give our milk to the baby calf, do we? I know it sounds silly, but that is the reality of it. You can't go against nature. Nature designed mother milk in such a way that only the baby of that mother is supposed to consume it. Just because your milk looks similar to cow's milk does not mean you can pick that up and consume it. The nutrient profile of every species' milk is very, very different because the nutritional requirements of the baby are very different. The amount of sugar, fat, and protein that is there in cow's milk is designed in such a way that the baby, after being born at an adult age, can grow up to 400 kilos. We're not supposed to grow up to 400 kilos. When we're born, we're anywhere between 2.5 to 3.5 kgs. At the most, even if we are 6 feet tall, we should be no more than 80 to 90 kilos. So that's where you create a stressful environment. This milk, these meats, they destroy, first of all, the gut flora, which is the gut microbiome, creates a stressful environment. It disrupts nutrient absorption, it creates inflammation in the gut. Detoxification does not happen properly. Okay. Inflammation starts building up in the gut and then slowly it spreads throughout. It has been proven that consumption of these foods leads to joint issues. Okay, it leads to cholesterol levels getting higher. It causes damage to your liver. It does not let your liver function properly. It causes an imbalance of your sugar levels because it builds up insulin resistance. So again, you need to shift away from that, and that's why I'm taking examples of the cases that I've worked with. That if you are able to follow this kind of regime, the results are there to be seen. Now, today, his body feels clean, absolutely clean, because he's cut out all the nonsense. He's eating fresh, homemade, whole foods, plant based foods. So, I'm not saying you need to all shift to a completely plant based diet, but this is a reality check for all of you that do not be fooled by what the industry or the marketing says. Open your eyes. Okay, even the ancestors lived mostly on a diet that was mainly vegetarian in nature. There were obviously a certain lacuna, there were certain gray areas, but we can always correct them. If we have the knowledge today, that's what we're doing. We're just sharing it with you. Try and implement it yourself. So, for the general population out there, if you're facing issues like poor digestive health, for example, um, your sugar cholesterol levels are up and down, for example, try making these changes. Try to consume a more vegetarian plant-based diet. See the changes in 90 to 120 days. You'll be impressed. Your energy levels will go up. Your body is going to feel fresher and more energetic. You'll sleep better. Just a sign that your body is letting go of that stress. Stress is not something that only manifests here. Stress is present all around us. Stress is manifesting in the body in the physical form. Sticking on the topic of the fitness enthusiasts, some people think that if they work out more or longer, they'll get better results, faster results. Well, reality check for you again. You're just creating a stressful environment for the body. Instead of working 2 hours working out 2 hours in a day, you can do the same quality of workout in 40 to 45 minutes as well. It's always quality over quantity. We've noticed over the years, I've worked with more than 5,000 families. I've helped more than 300 to 350 professional athletes. Okay, these are people who are playing badminton professionally, cricket professionally, they're boxers, they're MMA fighters, tennis players. We've noticed the changes, over a period of time. So it's very important that you create an environment for yourself that is stress-free. Coming to children, okay, and obviously immunity is a big concern. Just by doing whatever I told you right now is going to anyway ensure that your immunity is in check. Because see, if you check your gut bacteria, if it's healthy, that's the first line of defense. So if your first line of defense is taking care of everything, you need not worry about everything that comes after that. For children, so this young one was basically suffering from tightness in his legs because badminton is a sport in which it requires a lot of stretching, a lot of sprinting around on the court. So he was suffering from this kind of heaviness in the body.
and there was like the tightness in his legs. His mother came to me yesterday, in fact, and she said that my son is telling he reached the semi-final, obviously, and it was nothing to do with his fitness, but his racket, did not support him, so to say, in the semi-final. She said her son himself has said, and she has also observed that he's faster on the court, he's jumping higher, and his body is lighter. And these are the changes we experienced only in 2 weeks. Why? Because they thought that if he takes his 3 glasses of milk on a daily basis, that's all he needs. He's getting everything. Well, we just shifted him away from that. Okay. More whole foods to be eaten at home. He's taking his fruit, his vegetables, his nuts, and these are the changes that we've seen. Okay, it's as simple as that. So for all of you, I mean, just to draw up some general guidelines. Okay, first of all, don't fall for the industry fads. Get away from the processed foods. Stop consuming sugar or brown sugar. If someone tells you that you can consume sugar, oh, we've been doing it traditionally, culturally for so long, it's okay to have a little bit in your chai or whatever it is. No, it's processed. You do not consume things that have been converted to one or other forms. You need to have it in the natural form. Go for jaggery instead. What's the problem with that? Add cinnamon to your tea for all it matters. And yeah, all you caffeine drinkers, be it tea or coffee, stop relying on the tea and coffee to wake you up in the morning or to freshen you up or to keep you going through the day. That's a temporary fix. So caffeine is going to help get those dopamine levels going just for a short while. You don't want your dopamine levels going up by drinking caffeine, tea, or coffee. You want your dopamine levels going up by doing yoga with Meher, for example. You want your dopamine levels going up by eating good whole food, by exercising otherwise, by reading a book, doing the things that you like. Stop relying on these shortcuts. Stop relying on that piece of chocolate or that mithai to get your dopamine levels going. Okay, all these things will have adverse side effects, and if you are anywhere in the region of 35 to 50 or maybe even 60, you would have already you would have all started experiencing these problems. Drinking caffeine, basically tea or coffee on a regular basis, will lead to joint issues, digestive issues, and BP issues for sure, if nothing else. Okay, get away from the whole myth that we need to consume our milk products to get our daily dose of protein and it's good for us. No, it's a bunch of nonsense. Okay, go on to Google Scholar, basically, which is a reliable source for all knowledge-based reading. Stop reading random articles. You read ton of stuff in the newspapers, ton of stuff on the internet. Just stop relying on everything you come across. Okay, it's very, very simple. Go on to Google Scholar if you want. Read about what a diet should actually be like for us. Okay, if you have doubts, you can always reach out to us. We'd be happy to solve your queries. Stop taking your milk and milk products. Stop eating meat. You can get your protein by eating your pulses, your dals, your legumes, like rajma, chola, and beans. You can get your protein by eating mushrooms and peas and broccolis. There's protein in everything. There's protein in your roti as well, in your chawal as well, in your rice. You get your protein from everywhere. We just fail to count it because the industry doesn't want to focus on that. Because they don't make money from that. They make money by selling meat. And this meat, again, is coming from the farms where animals are force-fed. They're force-fed with soya and corn so that their weight increases rapidly. There's a lot of fat in the meat that you're consuming today. It's all poor quality meat, okay, and the gut anyway gets inflamed if you consume it. So eat the protein, vegetarian protein sources that I just mentioned. Do not negate eating raw food. Raw food is very important because see, your raw food will have soluble and insoluble fibers. These will again ensure that they form a good source of food for the bacteria. We call these foods pre-bacterial foods. Okay, so eat your raw foods. This can be nuts, your dry fruits, your salads. Since we're sitting in the month of February, spring is around the corner. So, I mean, winter and spring, these are the best times to get your fresh foods. So get your daily dose of vegetables, be it cooked, be it raw, make the most of them. You will definitely see the results, be it in the gym, with your kids, or even on a daily basis.
your indicators, your key indicators are your energy levels through the day, your sleep quality, okay, at night, how you wake up in the morning. How you wake up in the morning is very important. If you're struggling to get out of bed, clearly there's something wrong. You should start eating your meals not at 10 to 11 p.m., but rather closer to maybe 8 p.m. and give your body a break of 11 to 12 hours before consuming the next meal in the morning. More so, intermittent fasting, as it is called popularly today, is nothing but fasting that we've been doing for generations and generations and for centuries. We're supposed to eat our meal, okay, at 7, 8, and just wait till 7 or 8 again in the morning. We call it fasting. The industry popularly loves to call it intermittent fasting, and then they sell you. They'll charge you for telling you that you need to fast for 12 hours. It's just common sense, because that's when your system gets rest. That's when the body detoxifies. So if you don't give it that time, you can't expect to feel fresh and recovered the next day. All these things also affect the blood circulation. What is that one parameter in your body that would affect how you feel throughout the day? It's how efficiently your blood is circulating. The blood carries the oxygen, the blood carries the nutrients, it carries everything. So if you are inflamed, if there is inflammation, if you're stressed, it constricts the blood vessels. Okay, it narrows down the blood vessels. So if it's very simple, you can compare it to a water hose or water pipe. If there is any blockage in it, you can't expect the water to flow at the same rate at the end. So instead of constricting the blood vessels, you need to eat food that is anti-inflammatory in nature, which will help dilate the vessels, because that will ensure there is proper blood circulation. Very important point, especially for the general population and for the fitness enthusiast and the athlete. If you want to feel well, you need to ensure that blood circulation is efficient. For the athletes out there, if you want your muscles to respond to you, you need to ensure that there is efficient blood supply to your muscle. If you're going to consume your meats thinking you're going to get protein and that's the only source of your so-called energy and protein, well, you're highly mistaken. You can speak to the hundreds and hundreds of people I've worked with. Each and every person will tell you the same thing. Okay, this research would also tell you the same thing. So get your protein from these sources, eat your raw foods. It's very important. Focus on fresh food at home. One more point, fats are not the culprit. It's the source of the fats that are culprits. So stop taking your refined oils from the market, your sarson ka tel. No, it's not healthy. Okay. Eat your desi ghee at home. It's very, very important. Okay. It's going to help boost your immunity, keep your joints healthy. It's great for the brain. Eating your omega-3 rich foods are important. Your brain is 80% fat. Omega-3 rich foods would be your nuts, flax seeds, for example. There's omega-3 in your ghee as well. I definitely encourage people to consume vegetarian-based omega-3 supplements. Okay, not the fish oil ones, vegetarian omega-3 supplements. You will gain a lot from it. Keeping the whole COVID situation in mind, it will help boost your immunity, obviously. Okay. Your vitamins, honestly, can be taken from your food. You don't need to consume the supplements for that. Consume your green leafy vegetables, all the colorful vegetables, because that will ensure there are a lot of antioxidants in your food. Antioxidants basically are just, so what are vitamin C and what vitamin A and vitamin E? They are basically kinds of antioxidants. So why restrict yourself just to the vitamin C tablet? You can go for a host of antioxidants and vitamins by consuming lots of raw vegetables and fruits, right? So as you see, all I'm trying to tell you is cut down on your grocery bill. Whatever you're spending on a monthly basis by picking up those protein powders and picking up all those processed packaged foods, you know what? Just hit the fresh food section every day. Pick up your daily dose of vegetables and fruits. Come home, enjoy the goodness of that. If you have a sweet tooth, eat a fruit instead of consuming a mithai or a chocolate. What's wrong with that? I mean, so these are little changes that you can start implementing today itself. You need not think hard about it. It's common sense. It's a no-brainer. Try giving it a shot. You'll definitely see changes in the weeks to come. And yeah, like Pooja mentioned,
since the COVID situation is around the corner, I've definitely taken that into account. If you make these changes, your immunity is definitely going to be better. Having said that, though, take all your precautions. The vaccination is there, great. We don't know how effective it is, honestly, but one can still, contract it, be a spreader. So take all your precautions. It's very important you do that. Be physically active. Practice yoga with Meher regularly, or you can do stuff at home. There's a lot of stuff available on YouTube, on the internet. Stop making excuses. Stop making excuses for not eating your meals on time and not being able to exercise. If you're going to make excuses, you're the one missing out. You're the one who's losing out. No one else. I absolutely agree with you. Whatever you have, whatever you said about having fresh fruits and fresh food is so important to us in our daily lives, and we tend to have fridge all foods which are kept on the fridge, and also we have to keep that in practice. So it begins from daily practices, and so definitely we'll keep everything in mind what you've said. And once we receive all the questions, Vaibhav, I will take it forward with you in the coming sessions as well. So, and I would like to take leave from this from your session now, and thank you so much for joining with us again. And we would like to listen to you again. And thank you for this wonderful session. We'll come back with you for the questions. You're welcome, Pooja. Thank you so much. Thank you, everyone. Hello, everyone. I would like to invite Dr. Goel, who has already joined with us. Dr. Ashwini Goel. Good morning, sir. Hi, good morning, Pooja. Good morning, sir. And he is a naturopathic doctor and a homeopath. And we'll be having a special session with him. We have named it as Be Your Own Doctor. So, it might be a very interesting session. So we would like to listen from you. So without taking much time, I would like to give the screen to you, and please conduct your session. I'll come back with a few questions I have. Sure. Thank you very much, Pooja, for the wonderful introduction. Hi, good morning, everyone. I'm Dr. Ashwini Goel from Bangalore. I would like to give thanks to Pinetia, who designed such a beautiful platform, where we can share our knowledge, we can share our experience, and people can improve their health. So today in this session, be your own doctor, which means the time has come where you needed to learn the basic principle of living. So in this COVID environment, we have all understood how important the immunity is. Now let's understand what is the immunity is all about. Immunity होती क्या है? Immunity एक डिफेंस सिस्टम है जो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज से बचाती है. जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम उससे फाइट करता है, और अगर वो जीत जाता है तब हम सेफ रहते हैं, वी विल नॉट फॉल सिक. बट अगर हमारा डिफेंस सिस्टम वीक हो जाएगा एंड द बैक्टीरिया विल विन द वॉर, देन हम बीमार पड़ जाएंगे. तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में, पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई टैबलेट बता दीजिए, कोई मेडिसिन बता दीजिए जिससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाए. इम्यूनिटी किसी टैबलेट के अंदर नहीं होती है कि जिससे लेने से हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाए. हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर है, हमारे फूड के अंदर है. इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर फूड. द ओनली थिंग वी नीड टू लर्न कि उस न्यूट्रिशन को हम किस तरह से फ्रूट से बाहर निकाले ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से बिल्डअप हो. सो आज मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगा जहां पे लोग गलतियां कर जाते हैं. एंड आई एम श्योर आई हैव बीन सीन इन दिस लास्ट 15 इयर्स ऑफ माय मेडिकल प्रैक्टिस कि जो लोग ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है. इम्यूनिटी सबसे पहले खराब क्यों होती है? जो आदमी जल्दी बीमार पड़ता है, सर्टेनली उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक पड़ जाएगी. तो सबसे पहले हमें ये सीखना कि हाउ वी विल नॉट फॉल सिक फ्रीक्वेंटली. अगर आप साल 2 साल 3 साल बीमार नहीं पड़ते हो, ऑटोमेटिकली यू विल सी योर इम्यून सिस्टम हैज बिकम वेरी स्ट्रांग. और 3 साल के बाद अगर आपको कोई कफ एंड कोल्ड या और कोई दूसरी बीमारी होती है तो यू विल रिकवर इन 2 days. सो आइए हम बात करते हैं कि हम अपने किचन के जरिए किस तरह से अपनी ओपन
कर सकते हैं अपनी खुद की डिस्पेंसरी और किस तरह से हम खुद का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पानी के ऊपर। नेचुरोपैथ में वी कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी, जल थेरेपी। पानी से हम किस तरह से अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, पानी से किस तरह से हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है, we all need to understand how much water we should drink on a daily basis. इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला I would like to discuss with you. Every 25 किलो बॉडी वेट needs 1 लीटर वाटर पर डे। हर 25 किलो बॉडी वेट को हर रोज 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। So if your body weight is 55 किलो, that means you need to drink 2 लीटर वाटर पर डे। अगर आपका बॉडी वेट 65 या 70 है, which means you need to drink 2.5 लीटर वाटर पर डे। If you are weighing 75-80 किलो, which means you need to drink 3 लीटर वाटर पर डे। And if your body weight is 90 and above, somewhere 95-100, you need to drink 4 liter water per day. कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन होता है। Prolonged dehydration leads to kidney stone, gallbladder stone, high blood pressure and piles. जैसे कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हमें स्टोन हो गया है, हमारा बीपी बढ़ रहा है या हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है, इमीडिएटली मैं समझ जाता हूँ कि 90% प्रॉब्लम इज नॉट ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर। उनको पता ही नहीं हमें कितना पानी पीना चाहिए, बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत पानी पीते हैं। सो जैसे कि ओके फाइन, यू मॉनिटर इन 4 गिलास ही पानी पी रहे हैं, which means हाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट 3 लीटर एंड he or she is drinking only 1 liter water per day. So पानी का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। Now कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब प्यास ही नहीं लगती, गेट्स इंप्रूव। जो चीज मेजरमेंट हो जाएगी उसको आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो आप एक शेड्यूल बना लो। लेट्स से आपको 3 लीटर पानी पीना है सुबह से शाम तक। सो यू डिवाइड द होल डे इन 3 पार्ट, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कवर 3 लीटर वाटर पर डे। सुबह 7 बजे से उठ के 11 बजे तक ट्राई टू फिनिश 1 लीटर वाटर। देन 11 o'clock से लेके लंच तक 2 o'clock तक ट्राई टू फिनिश सेकंड बॉटल। एंड इवनिंग 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ट्राई टू फिनिश थर्ड बॉटल। एंड अगर आपको 4 लीटर की जरूरत है, देन ट्राई टू फिनिश 7 o'clock to 10 o'clock. So easy. If you split the whole day in 3 to 4 parts, then you can cover your water target. It's not a big deal. पानी हमारे ब्लड को थिन करता है। अगर आपका ब्लड थिन होगा, you will have a better blood supply in the whole body. आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। अगर आप सफिशिएंट पानी पियोगे तो whatever food you are eating, it will digest properly. Stone formation नहीं होगा। If you are drinking water, your motion will be very soft and it will pass out through the large intestine every morning. So आपको कभी भी constipation नहीं होगा। You can prevent gastric and acidity yourself. So how do you think? Just by focusing on water, which is free of cost, we can avoid so many diseases. You can control so many diseases. और अगर आप बीमार नहीं पड़ते हो और पानी अगर आपको प्यास नहीं लगती है तब कैसे पीना है? Drink when you are not thirsty. Drink when you are not thirsty. अगर आपको प्यास लग रही है फिर पानी पी के फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है अंदर से कुछ जल गया है, ड्राइनेस हैज कम। जो चीज जल चुकी है अब उसके ऊपर से पानी पीने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यू शुड ईट व्हेन यू आर नॉट हंग्री, यू शुड ड्रिंक व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी। दीज आर द प्रिंसिपल्स। सो यू ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू। जब पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं तो मैं पूछता हूँ अभी 1 o'clock हो रहा है, आप कितने बजे घर से निकले थे? डॉक्टर साहब हम 11 o'clock घर से निकले थे। When you will reach at your home 2:30. So which means 11 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक they are dehydrated. वो कुछ पानी नहीं पी रहे। So why don't you carry a water bottle with you? And every 1 hour, if you focus on just complete 1 glass of water, it is sufficient. Job done. Job done. तो जब भी आप कहीं जाते हो, always carry a water bottle with you. That's it. It's your help. फिर हम बात करते हैं कि पानी पीने का नियम क्या है। पानी एक्चुअली पिया नहीं जाता, पानी खाया जाता है। बंगाली के अंदर, वेस्ट बंगाल में लोग कहते हैं दादा जल खाबे की। सो पानी इस तरह से पिए कि आपको लगे कि मैं खा रहा हूं। खाना हम कैसे खाते हैं? चबा चबा के। अगर आप देखो नेचुरल एनिमल्स वो किस तरह से पानी पीते हैं। चिड़िया कैसे पानी पीती है? घूंट भर घूंट। कुत्ता कैसे पानी पीता है? घूंट भर घूंट, चाट चाट के। हम पानी कैसे पीते हैं? गट 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 गट। अब हमारे पेट में काफी सारे एंजाइम्स, काफी सारे एसिड निकलते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा होती है एसिड की हमारे एब्डोमेन एरिया में, हमारे स्टमक में।
अब एक्स्ट्रा एसिड होने से इंडाइजेशन हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, काफी सारे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। तो उस एक्स्ट्रा एसिड को नलिफाई करने के लिए हम अल्कलाइन का यूज करते हैं। एलोपैथ में काफी सारी दवाई होती है, प्रोबायोटिक्स होती हैं, सिट्राल का मेडिसिन है, वो बॉडी को अल्कलाइन करती है, एसिडिक को कम करती है। अब नेचुरोपैथ में हम किस तरह से बॉडी में अल्कलाइन को बढ़ाएं और एसिड को कम करें? आपको खाना चबा चबा के खाना है, आपको पानी घूंट भर घूंट पीना है। हमारे मुंह में सलाइवा होता है, दिस इज 100% अल्कलाइन इन नेचर, ये एसिडिक नहीं होता। अब अपने को इतना ही करना है, व्हाट यू नीड टू डू, किस तरह से ये मुंह का सलाइवा आपके पेट में जाए और एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, फिर काफी सारा आपका इन्फेक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आप गट 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 जल्दी जल्दी पानी पी लोगे तो आपका सलाइवा अच्छे से पेट में नहीं जाएगा और एसिड की मात्रा ज्यादा रह जाएगी। लेकिन अगर आप घूंट भर घूंट पानी पीते हो, सिप बाय सिप, सिप बाय सिप, सिप बाय सिप, सो पानी की हर एक सिप के अंदर आपका सलाइवा मिक्स होगा और कितनी सारी मात्रा हो जाएगी अल्कलाइन इस लिक्विड की, और जब वो पेट में जाएगा आपका एसिड कम हो जाएगा, आपकी इंडाइजेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, आपका हेवीनेस खत्म हो जाएगा, आपको जो खट्टी ढकारें आती है, बब्स आती है, वो कम हो जाएगी, आपका जो चेस्ट बर्न होता है वो कम हो जाएगा, एंड यू विल फील रिलैक्स। क्योंकि गैस्ट्रिक एसिडिटी होने से बॉडी में भारीपन होता है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत स्टिफ हो जाती है, हमारे मसल बहुत टाइट हो जाते हैं। कब तक गैस्ट्रिक एसिडिटी की टैबलेटें ली जाए? 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? तो लर्न हाउ टू ड्रिंक वाटर। अगर आप घूंट भर घूंट पानी पीते हो तो आपके बॉडी में कभी भी एसिड नहीं होगा, कभी इंडाइजेशन नहीं होगा, एंड वी कैन कंट्रोल सेवरल डिजीज जो कि स्टमक से रिलेटेड है और हमारे फूड पाइप से रिलेटेड है। सो हाइड्रोथेरेपी इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूं कि लोगों को नॉलेज हो, कितना पानी पिए, किस फ्रीक्वेंसी में पानी पिए और किस तरह से पानी पिए। नाउ बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब गैस्ट्रिक एसिडिटी का हमें ट्रीटमेंट कराना है, बहुत इलाज करवाया, 5 साल से मैं टैबलेटें खा रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जब मैं पूछता हूँ कि आप पानी कैसे पीते हो, तो पता चलता है कि दे आर ड्रिंकिंग अर्ली मॉर्निंग, सुबह 2 लीटर पी लिया, फिर पूरे दिन कोई पानी नहीं पिया, फिर रात में 8 बजे के बाद पानी पीना शुरू करते हैं। वेरी वेरी डेंजरस, डिजास्टर। मैंने देखा है जो लोग रात में पानी पीते हैं आफ्टर डिनर, उनकी एसिडिटी हमेशा एग्रीवेशन मोड पे रहती है, ऑलवेज दे आर हैविंग अ हाइपर एसिडिटी अटैक। फिर हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट होते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं, लाखों रुपए का बिल बनता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, दे आर नॉट गेटिंग अ परमानेंट रिलीफ। सो बॉडी का नेचर है, अगर आप दिन में उसको सफिशिएंट सप्लाई नहीं करोगे, देन बॉडी विल डिमांड इन द नाइट टाइम। अगर आप पूरे दिन भर में अच्छे से पानी पीते हो, देन यू डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर इन द नाइट टाइम। जो आदमी डिनर के बाद पानी पीता है, सर्टेनली ही और सी विल हैव अ डिस्टर्ब्ड नाइट। हर 2 घंटे में हमारा ब्लैडर 1.5 से 2 घंटे में फिल हो जाता है। 500 ml यूरिन होते ही यू विल हैव अ अर्ज ऑफ पासिंग द यूरिनेशन, ब्लैडर पे लोड लगता है, यू कांट कंट्रोल। तो आपको रात में 1:30 बजे उठना पड़ेगा। एक बार अगर आप उठ जाओगे तो घंटे भर तक नींद नहीं आएगी, फिर आप सुबह 3:30 बजे उठोगे, फिर नींद नहीं आएगी। अगर आप रात में 2 बार भी उठते हो तो यू विल बी टायर्ड नेक्स्ट डे, बर्निंग सेंसेशन होगी आंखों में, डलनेस रहेगी, लेथार्जिकपन रहेगी, एक्टिवनेस नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑन एनीथिंग। किस तरह से हम इस चीज को रोक सकते हैं? दिन में अच्छे से पानी पियो, रात में पानी मत पियो। डिनर के बाद नॉर्मली आई एडवाइज टू ऑल माय पेशेंट कि हैव ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट। आप अगर 8, साढ़े 8, 9 बजे डिनर करते हो, 10 बजे आप 1 गिलास पानी पी लो, एंड फिर 11 को अर्ज है नहीं है, डज नॉट मैटर, सम यूरिन इज देयर इन द यूरिनरी ब्लैडर, इफ यू विल गो some urine will come. So try to empty the bladder before sleep and then you go to bed. You will have a sound sleep, undisturbed sleep, and next morning when you will get, you will feel fresh and energetic and काम पे आप concentration कर पाओगे। So देखा आपने, पानी के जरिए हम कितनी सारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी है और अगर आप पानी पीते हो, डेफिनेटली 2-2.5 घंटे के अंदर आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। सो आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा सोडियम है, जो नमक है, वो निकल जाएगा एंड योर बीपी विल गेट कंट्रोल। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब डिस्पाइट ऑफ टेकिंग द बीपी मेडिसिन मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज नॉट यू आर नॉट ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर, योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड। अगर आप पानी पियोगे तो आपका बीपी 2.5 घंटे 3 घंटे में कम हो जाएगा। अभी आप चेक कर लो 150 है, आप पानी पीजिए, यूरिन पास करो 2 बार 3 बार, देखो वो कंट्रोल आ जाएगा, 130 आ जाएगा। हमने तो हजारों
सालों से इतने हजारों पेशेंटों पे देखा है। इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी। थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, थोड़ा सा कूल रहना है, डिटर्मिनेशन की बात है, डिसिप्लिन की बात है। आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे। मंकी सी मंकी डू जैसे हम बोलते हैं, तो जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे बोलते हैं। आप अगर पानी नहीं पी रहे हो, आपके बच्चे दे विल नेवर लिसन यू, दे विल नेवर लिसन यू। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। पिनेशिया ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। मेरे इतने साल का तजुर्बा मैं 10 मिनट आधे घंटे के अंदर आपके साथ कैसे शेयर करूं, आई एम लिटिल कंफ्यूज। बट ये सेशन अगर आप लोग अच्छे से सुनते हो, इंप्लीमेंट करते हो और आपकी हेल्थ में अगर इंप्रूवमेंट होता है, तो हर संडे आई विल ट्राई टू अरेंज हाफ एन आवर एंड वी विल इंटरेक्ट। आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आप डायरी में नोट करो और उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो, एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग योर हेल्थ बेनिफिट विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वन। उनको बताओ कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, हमने कभी देखा ही नहीं कि पानी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और इस तरह से पीना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है और हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और इसी इम्यूनिटी वीक होने से बीमार पड़ रहे हैं। जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो थायराइड की प्रॉब्लम्स आती है, घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, अस्थमा की शिकायत है, माइग्रेन है, साइनस है। ये सारी बीमारी तब होती है, जनरली इनको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए और कमजोर होके वो आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय आपके बॉडी को अटैक करने लगे, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो इम्यूनिटी को किस तरह से ठीक करो? पानी से शुरुआत करो, और बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए मैं दूसरा टॉपिक पकड़ता हूं। गैस्ट्रिक एसिडिटी एक बड़ी आम और कॉमन बीमारी है। बच्चे, बूढ़े, मेल, फीमेल सब इस चीज से परेशान हैं कि डॉक्टर साहब गैस्ट्रिक एसिडिटी का कुछ करो, इसकी कोई होम रेमेडी बताओ, नेचुरल तरीके से हम कैसे इसको कंट्रोल करें। पूरे बॉडी में पेन रहता है, इरिटेशन रहता है, एक अजीब तरह की एंजाइटी बनी रहती है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हमारे खाने के अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। वो न्यूट्रिशन खाने से अच्छे से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। सो विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो जाती है। सो अपने को एक ही काम करना है, आपको एक ही चीज सीखनी है कि एक्स्ट्रा टैबलेट या मेडिसिन लेने के बजाय जो खाना हम खा रहे हैं, आप दाल चावल खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, उसके अंदर से प्रोटीन को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके अंदर से कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को बाहर निकाला जाए। वो खाना अच्छे से टूट नहीं रहा है, इट इज नॉट एबल टू चर्न प्रॉपरली इन आवर स्टमक। ये काम मुंह से शुरू होता है। आपका ट्रीटमेंट आपके माउथ से शुरू होगा। Why God has given us 32 tooth? स्माइल के अलावा भगवान ने हमें 32 दांत इसलिए दिए हैं ताकि हम हर एक गासिया जो हम बोलते हैं हिंदी में, हर एक कोवा जो हम बोलते हैं, हर एक पीस जो हम बोलते हैं खाने का, इसको हम 32 टाइम्स चू कर सके। अगर आप मुंह में खाने को 32 बार यानी कि 32 टाइम्स चबाते हो, तो पेट में खाना नहीं जाएगा, जूस जाएगा, सिर्फ लिक्विड जाएगा। तब अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में एंड एसिमिलेशन होगा। खाने को तोड़ के उसके अंदर से न्यूट्रिशन को बाहर निकालना, एब्जॉर्प्शन हो गया, एंड पूरे बॉडी में ब्लड के जरिए सप्लाई होना और एक एक सेल्स एंड टिश्यूज में जाना, एसिमिलेशन हो गया। सो दो ही काम पे फोकस करना है कि न्यूट्रिशन खाने से कैसे बाहर आए और बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक पार्ट्स में वो न्यूट्रिशन कैसे जाए। सिंपल। सो ये डाइजेशन यहां से शुरू होगा। नॉर्मली मैंने लोगों से पूछा है, जब भी मेरे पेशेंट आते मैं पूछता हूँ, जब आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कभी आपने ध्यान दिया है, कभी आपने काउंट किया है क्या आप कितनी बार चबाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, ध्यान तो टीवी में पड़ा है, ध्यान तो गपशप में पड़ा है, ध्यान तो गॉसिप में पड़ा है। कितनी बार तो लोगों को यही नहीं पता रहता कि हमने 2 चपाती खा ली है, 3 चपाती खाई, कौन सी सब्जी हमने खाई ये नहीं पता रहता। जब मैं लोगों से पूछता हूँ डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंदर, आज ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिया, 10 बजे मैं उनसे टेलीफोन से बात करता हूँ और सुबह उन्होंने 9 बजे नाश्ता किया है, 1 घंटे में दे कैन नॉट रिमेंबर कि उन्होंने क्या खाया। वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि ध्यान नहीं है, ध्यान मोबाइल में है, ध्यान सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट देखने में, वीडियोस देखने में पड़ा है, खाने पे ध्यान नहीं है। तो फिर खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? सो आपको क्या करना है, 70% डाइजेशन मुंह में करना है एंड 30% डाइजेशन पेट में करना है। आप अच्छे से चबा चबा के खाओगे तो पूर्ण रूप में वो बॉडी के अंदर जाएगा, एंड चूंकि लिक्विड है तो लीवर
को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसके डाइजेस्ट करने में। एंड अगर आपका फैटी लीवर है, स्लोली एंड ग्रेजुअली फैटी लीवर कंडीशन विल इंप्रूव। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आया है, कोई दवाई बताइए। दवाई तो हम बता देंगे लास्ट में, पहले आप अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपनी हेल्थ का डिसीजन लो कि हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है। इसके लिए आपको कुछ बैड आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ नई आदतों को इनकलकेट करना पड़ेगा। मेरी दवाई लेने से क्या होगा? 2 महीने आराम, 3 महीने आराम, 6 महीने आराम। जीवन भर आप दवाई लेना चाहते हो? यू वांट टू बी डिपेंडेबल ऑन अस? यू वांट टू बी डिपेंडेबल ऑन डॉक्टर कि जीवन भर उनके पीछे भागते रहें, लैब में टेस्टिंग कराते रहें, बीमारियां सामने आती रहें और टैबलेटें खाती रहें? Why don't we take our own decision कि life is ours, so हमें हेल्दी रहना है। इसलिए मैंने इस सेशन का नाम रखा है Be your own doctor। आप खुद डॉक्टर बनो, खुद का इलाज करवाओ। जिस तरह से एक माँ बाप जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, डेफिनेटली स्कूल की जिम्मेदारी होती है, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चा आए तो पूछे कि बेटा क्या सीखा, क्या होमवर्क मिला, कैसे आपने जवाब दिया, एग्जाम कैसे गए। सारी जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेज, टीचर, प्रोफेसर की नहीं होती है, उसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है। इसी तरह ये जब मेडिकल प्रोफेशन की बात आती है, जब ट्रीटमेंट की बात आती है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की नहीं होती, सारी की सारी जिम्मेदारी मेडिसिन फार्मा कंपनी की नहीं होती, पेशेंट की जिम्मेदारी बनती है। अपने जीवन का दायित्व खुद लेना होगा कि किस तरह से धीरे 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 हम गुड हैबिट्स को डेवलप करें, बैड हैबिट्स को छोड़े, ताकि हम बीमार ही ना पड़े, अपनी इम्यूनिटी हम खुद बढ़ाएं। ठीक है, सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो अभी मैंने बताया खाना कैसे खाना है, 32 बार चबा चबा के। तो इस सेशन के बाद अभी 9:51 हो रहे हैं, जब आज आप दोपहर में खाना खाओगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीवी को बंद करें, गपशप को बंद करें, मोबाइल को बंद करें। 15 मिनट, 20 मिनट आप खाना खाते हो, घंटे भर कोई खाना नहीं खाता। आप काउंट करो कितनी बार खाते हो। अगर आप 15 बार भी चबा पाते हो, 20 बार भी चबा पाते हो, तो कुछ महीनों के बाद आपका लीवर इंप्रूव हो जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा और काफी सारी बीमारी आपकी कम हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट डू थिंग, इसको काउंट करना शुरू करें। अगर आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन को इंप्रूव करना है, और कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। खाने से 45 मिनट्स पहले पानी न पिए। अगर आपको पानी पीना है, अगर आप 2 बजे खाना खाने वाले हैं, तो लास्ट आप 1:15 तक पानी पिए, उसके बाद पानी नहीं पिए। ठीक है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के हिसाब से हमारे स्टमक में जठराग्नि होती है, जठर होता है, जठराग्नि, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आपने खाना खाया, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, एक्टिवेट हुई और वो खाने को डाइजेस्ट कर रही है और इमीडिएटली आपने गट 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 पानी अगर पी लिया, तो जठराग्नि बंद हो जाएगी। फिर आपका खाना हजम नहीं होगा, फिर न्यूट्रिशन बाहर नहीं आएगा, इंडाइजेशन होगा, फिर फैटी लीवर बनेगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी और तमाम किस्म की बीमारियां आएंगी। सो खाने से आधा घंटा पहले, 45 मिनट्स पहले पानी ना पिए, खाना खाने के आधे घंटे के बाद तक आप पानी ना पिए। ठीक है, कई लोग खाने के बीच में पानी पीते हैं, पी सकते हैं, बट एज पर आयुर्वेदा, एज पर नेचुरोपैथ नहीं पीना चाहिए। अगर आप सुबह से दिन तक अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो, डेफिनेटली बॉडी विल डिमांड वाटर इन बिटवीन ऑफ द फूड। जब आप खाना खाओगे आपको प्यास लगेगी, लेकिन अगर आप सुबह सुबह अच्छे से पानी पी लेते हो तो आपको खाना खाने के बीच में पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो थ्रोट है, जो इसोफेगस पाइप है, तो ये बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए जब आप खाना खाते हो तो आपको प्यास लगती है और उसकी वजह से एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये 3 कामों को आपको अवॉइड करना है डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। एक चीज और, अगर आप, अभी तो काफी सारा ऑनलाइन का जमाना आ गया है, काफी सारे लोग घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो यू हैव ए लिबर्टी टू टेक रेस्ट सम टाइम आफ्टर लंच। और जो गृहिणी, जो हाउसवाइफ नॉर्मली घर में रहती है, उनको तो मैं स्ट्रॉन्ग रेकमेंड करता हूं कि सबसे पहला काम आप ऐसा करो। आप अगर अपने लीवर को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अगर अपने इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, पेनक्रियाज आता है, और भी काफी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। अगर ये सारे ऑर्गन्स आपको इन्वॉल्व करना है अपने डाइजेशन में अच्छे से ऑप्टिमल लेवल में, सो खाना खाते ही आप 45 मिनट सो जाओ, 1 घंटे सो जाओ इफ पॉसिबल। इफ यू कैन टेक अ नैप ऑफ 45 मिनट्स टू 1 आवर, दिस इज द बेस्ट थिंग यू विल डू फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और सोने का फॉर्मूला क्या है, कैसे सोना है? सोना आपको लेफ्ट साइड में है,
यानी कि जब आप बेड पे सो खाना खाने के बाद, तब आपका राइट शोल्डर अपर साइड में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, आपका राइट हैंड ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर नीचे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड नीचे होना चाहिए। इस गाइडलाइन को आप यूज करके देखो 1 वीक 10 डेज, और फिर देखो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंप्रूव हो जाएगा, आपका खाना कितनी जल्दी हजम होगा, और एक डिफरेंट काइंड की एनर्जी एंड डिफरेंट काइंड का स्टेमिना यू विल फील। सो खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाओ, आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद आप अपने किचन का काम करो, अपने ऑफिस का काम करो। ठीक है। आसन अगर आप करना चाहते हैं खाना खाने के बाद ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाए, आपका खाना हजम हो जाए, तो वज्रासन। वज्रासन का नाम इसलिए वज्रासन रखा गया है, ये आपके बॉडी को वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आप महात्मा गांधी जी को देखो, जो कि बहुत बड़े फॉलोवर थे नेचुरोपैथ के, कितने स्वस्थ थे, कितने हेल्दी थे। जेल के अंदर भी जब वो अपने साथियों के साथ डिस्कशन करते थे तो हमेशा पांव को फोल्ड करके वज्रासन में बैठ के बात करते थे घंटों भर। जब वो किसी इवेंट्स में, सेमिनार में बैठते थे, लेक्चर देते थे घंटों घंटों भर, जब किताब लिखते थे घंटों घंटों भर, 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे वज्रासन में बैठा करते थे, तभी उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। यही एक आसन है जो कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे जितने भी आसन हैं उसमें 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए खाने और आपके योगा के बीच में। ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाने के तुरंत बाद किया जाता है। इसका पर्पज ये है डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करें। अगर आपके पास पॉसिबल है, आप सोफे पे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ सकते हो, फ्लोर पे बैठ सकते हो, किसी भी कारपेट पे, मैट पे, चटाई में, कहीं पे भी आप बैठ सकते हो। और कितनी देर बैठना है? 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप लंच के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। डिनर के बाद अगर आप 5 मिनट बैठ जाओ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और पूरे फैमिली के साथ आप बैठो, आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, एक बड़ा सुंदर माहौल रहेगा घर में, एक बड़ा खुशी का माहौल रहेगा। सारे लोग खाना खा के 5 मिनट एक साथ वज्रासन में बैठे। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो दोनों कंधे सीधे होने चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टिफनेस, टाइटनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज्यादा प्रेशर न डाले। रिलैक्स होके जितना आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं 5 मिनट के लिए रिलैक्स होके बैठिए, फिर आप अपने घर का काम करो, अपने ऑफिस का काम करो, अपने किचन का काम करो। तो वज्रासन दोस्तों आप अपने डायरी में जरूर नोट कर ले। सो खाना जो खाना है 32 बार चबा चबा के खाना है, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाने से आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना, खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी नहीं पीना। खाना खाने के बाद अगर हो सके तो आधा घंटा 45 मिनट लेफ्ट साइड करवट लेके आपको सोना है, ताकि आपकी जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो सके, अच्छे से एक्टिव हो सके और डाइजेशन में हेल्प मिले। और खाना खाने के बाद 5 मिनट अगर हो सके आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर वज्रासन में बैठना है। सो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोथेरेपी, जेल थेरेपी, पानी का इंपॉर्टेंस, कितना पानी पीना, कैसे पानी पीना, पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन से कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर एंड पाइल्स, और किस तरह से हम इन बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। और आज हमने खाना खाने का प्रिंसिपल सीखा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगर आपके सवाल है, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। 10 से 15 मिनट आपके जो भी सवाल आप पूछ सकते हो। अगले संडे अगले सेशन में और इंफॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा एंड वी विल हैव अ गुड थिंग्स। थैंक यू सर। हेलो सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये। हमें बहुत सिंपल चीज से इतना इफेक्ट मिलता है डेली लाइफ में। अगर हम इस चीज को इफ वी कैन टेक इट, इम्बाइब इट इन आवर डेली लाइफस्टाइल, तो कितना मतलब महत्वपूर्ण होगा ये चीज। एंड तो डॉक्टर्स को डेफिनेटली वी डिपेंड ऑन डॉक्टर्स, बट द थिंग इज लाइक हमें खुद अपना डॉक्टर कैसे बनना है, और हमें कितना बेसिक चीज़ों को लाइफस्टाइल चेंज करना है। एंड स्पेशली इन पैंडमिक में हमें इतना कुछ सिखा दिया है। जैसे आर previous generations used to follow those norms, like the way we are trying to follow that. So Yes. sir, एक question है मेरा, if you can answer us कि how important बच्चों के लिए, how important it is to the gravity of the importance of water intake
to all the young mothers, to all the mothers who are developing their kids who are under 10. So how important it is there to imbibe drinking water. आज का Yes, टॉपिक यही है, तो जस्ट आई एम आस्किंग बेसिक क्वेश्चन ऑन दैट. यस पूजा, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले ही एक कपल मेरे सामने बैठे हुए थे और बोले कि डॉक्टर साहब हमारी 10 साल की बिटिया है और उनको पीरियड्स आ गए। आई वाज सरप्राइज टू हियर। और ये अभी इतना कॉमन होते जा रहा है। पिछले साल 1.5 सालों में मैंने देखा है 10 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहा है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि 12, 12.5, 13 साल की उम्र में होना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से हो रहा है। एज पर आयुर्वेद, एज पर नेचुरोपैथ, मेंसेस के लिए बॉडी में हीट होना बहुत जरूरी है, लेकिन समय से पहले एक्स्ट्रा हीट होना इट इज नॉट अ गुड थिंग। हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, दैट लीड्स टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर। सो मैंने देखा है बच्चे पानी पीते ही नहीं है। बच्चे पानी पीते नहीं है क्योंकि पेरेंट्स पानी नहीं पीते हैं। तो पिछले साल मेरे को याद है मैंने कुछ बच्चों का ट्रीटमेंट किया था, कोई मेडिसिन नहीं दी, मैंने सिंपल उतना बताया कि बेटा आप 2 से 3 चीजें ये करो एंड वी विल मीट अप आफ्टर 1 मंथ एंड फिर हम देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट आते हैं। आई गॉट अ ब्यूटीफुल फीडबैक। सबसे पहले मैंने उनको बोला बच्चों को कि आप जींस पहनना बंद कर दो 1 महीने के लिए। एक्स्ट्रा हीट हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। जितना ज्यादा हो सके जब आप घर में हो शॉर्ट्स पहनो, पजामा पहनो, लूज ड्रेस पहनो, लेट द विंड सर्कुलेट प्रॉपरली, लेट द विंड सर्कुलेट। हवा क्या होती है? हवा में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। तो जितना ज्यादा हवा बॉडी में जाएगी, हमारी स्किन की प्रॉपर्टी होती है ये एब्जॉर्व करती है। आप इस पे टेल्कम पाउडर डालो, इट विल एब्जॉर्ब। आप इस पे कोई भी डालो, इट विल एब्जॉर्ब। कोई डिओड्रेंट एंड परफ्यूम लगाओ, इट विल एब्जॉर्ब। लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा, नेल पॉलिश, जो भी चीज आप लगाते हैं एब्जॉर्ब होती है। तो बी केयरफुल, क्या लगा रहे हो, कितना केमिकल है, कितना एब्जॉर्ब होगा, कितनी टॉक्सिसिटी बॉडी में बनेगी, कितने टॉक्सिन्स बॉडी में जाएंगे, और फिर इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होगी, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। हार्मोन डिस्टर्ब होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो कि मेंसेस बनाते हैं, पीरियड्स टाइम से पहले आएंगे, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, स्पॉटिंग होगी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, इस टाइप की बीमारियां होंगी। सो बॉडी को ठंडा रखने के लिए ऑक्सीजन यानी कि हवा, विंड सर्कुलेशन जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। नॉर्मली बच्चे गट 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 पानी पी जाते हैं, तो उनको लिटरली कुछ महीने तक आपको ऑब्जर्व करके बोलना पड़ेगा, बेटा धीरे 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 घूंट भर घूंट पानी पियो। पानी अगर आप पीते हो तो आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट निकल जाएगी और धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बच्चों को नॉर्मली मैं बोलता हूँ जब आप लंच करते हो, डिनर करते हो, अभी आप घर पे हो, आप बाथरूम में जाओ, टैप खोलो, नल खोलो और पूरे यहाँ तक पानी डालो। हाथ ऐसे नहीं धोना है, कलाई तक हाथ नहीं धोना है, पूरे यहाँ तक आपको हाथ धोना है 10 मिनट तक। लेट इट पो, खूब सारा पानी डालने दो और फिर घुटनों के ऊपर पानी डालना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। खूब सारा पानी डालो, आप बैठ जाओ नल के नीचे, खूब सारा पानी डालो। आप देखोगे पुराने जमाने में हमारे जो ग्रैंड दादा, ग्रैंड नानी जो भी हुआ करते थे, खाने से पहले काफी सारा पानी हाथ पांव पे डालते थे, बॉडी के एक्स्ट्रा हीट को निकालते थे, बॉडी को ठंडा करने के बाद ही खाना खाते थे। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमारे फूड के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। दिमाग बहुत गर्म रहता है आजकल सारे दिन, ऑनलाइन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही रहता है। जो वाइब्स निकल रही है, जो कैमरे में है, जो स्ट्रेस है, नहीं सुनना, डिस्टर्ब होना, तो बॉडी को कूल कैसे किया जाए? पानी पी के। तो बच्चों को पानी पिलाओ, आप बोलो कि घूंट पर घूंट पानी पिए बेटा, और आप अपनी बोतल अलग से लगाओ और देखो कि कितनी देर में आप अपनी वाटर बोतल को कंप्लीट कर पाते हो। और वही फार्मूला जो मैंने बताया, सुबह से शाम तक बच्चों को भी कम से कम 2 से 3 बोतल फिनिश करने के लिए आप कोशिश करो। उससे देखो काफी सारी इंप्रूवमेंट होगी। बच्चों को वोमिटिंग आती, काफी सारे छोटे बच्चे जो मेरे पास होते हैं 4 साल 5 साल के, डॉक्टर साहब इसको उल्टियां बड़ी लगती हैं, कोई भी चीज खाना खाएगी वोमिट कर देगी, रात में 1:30 बजे वोमिट कर देती है, क्या इसको इन्फेक्शन हो गया? कोई इन्फेक्शन की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल गैस्ट्रिक एसिडिटी की बीमारी है। बच्चा अच्छे से पानी नहीं पी रहा है, अगर आप दिन में अच्छे से पानी पिलाओ, आप देखना 10-15 दिन के बाद उल्टियां होना बंद हो जाएगा। सो पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है था आज, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. And with this, sir, I would like to conclude our session for today. And I would like to thank Viatris for supporting us as always. Yes. And please log on to panacea.iletsonline.com for further
All the details are available over there. And I would like to thank also Let's Technomedia, eHealth, Narayana Health, everyone for joining with us every week since November. We have began the campaign. And thank you so much, Dr. Goel, for being with us. And we Thanks. would like to, definitely, we would like to venture with you again. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.